Well, इस मॉड्यूल में we'll be discussing that is the transport of sperms in man. That means कि the point from where the sperms are produced and then they are transported to the point where they are to be then ejaculated, and that is they are to be introduced into to the female. So yeah, this is all what we call the transportation. Now a system of tubes carries the sperms from the testis to the penis, which is the intromittent organ. The seminifastibules merge into the network, जो हमने इसकी हिस्टोलॉजी में जब देखा था, तो वहाँ पे एक इनॉस्टोमोसिस है, एक बहुत ही नेटवर्क है इन तमाम सेमिनिफेस्टिब्यूल्स के बाहर जब निकलते हैं एपिडिडमस के अंदर. तो देर और ये जो हिस्सा है दैट इज कॉल्ड एज द रीटी टेस्टिस, नाउ विच मर्जेस इनटू ए कॉइल्ड tube called the epididymis. So we are familiar what is the epididymis now. The epididymis has three main functions. ये बहुत important functions है. It stores sperm, सबसे बात तो ये है, और इसी के अंदर फिर maturity आती है और sperms उस काबिल हो जाते हैं कि then they can have the ability, they get the ability to fertilize the egg. इसमें एक physiological ability आ जाती है. It stores sperms until they mature and ready to be ejaculated. Then it contains smooth muscles that help propel the sperm towards the penis by peristaltic contractions. अब ये भी important है कि यहाँ पे maturity अगर हो जाए and if they don't come out, और तो वो भी अधूरी बात है. तो ये जाहिर है कि ये जो sperms है they are to now पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन से. किसकी पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस? पर्टिकुलरली दैट इज एपिडिडमस की जो ट्यूब्स हैं या फिर स्पर्म डक्ट है. नाउ इट सर्व्स एज ए डक्ट सिस्टम फॉर स्पर्म टू पास फ्रॉम द टेस्टिस टू द डक्टस डेफरेंस. दिस डक्टस डेफरेंस इज आल्सो कॉल्ड एज द स्पर्म डक्ट, जो कि हम इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि ये सारा टेस्टिस और ये रीटी टेस्टिस है. यहाँ से होते हुए ये एपिडिडमस है और वहाँ से देन देट इज द डक्टस डेफरेंस में इसका आना along with certain secretions and then the human, there is hormone also. Okay, now ductus deferens or sperm duct, then after leaving the scrotum, that continues forward, passes around the urinary bladder and enlarges to form the ampulla. और ये चीज़ हमने इस एम्पुला में ये देख. सो दिस इज डक्टस डेफरेंस, और जो ही ये फिर इसका टर्मिनल एंड जो है वो एम्पुला कहलाता है. और इसके साथ ही साथ ये दीज आर द ग्लैंड्स विच वी कॉल द सेमिनल वेसिकल्स. और इसके बाद फिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड ये चीज़, और इस प्रोस्टेट ग्लैंड के दरमियान में ये यूट्रिकल है और विच इज़ द यूरेथ्रा बिकम्स कंटिन्यूअस विद द यूरेथ्रा, और ये इजैकुलेटरी डक्ट है. तो ये तमाम जो ट्यूब्स हैं, अगर ये एक कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली स्पर्म्स जो हैं दे कैन नॉट कम आउट ऑफ द बॉडी. सो द एम्पुला दैट स्टोर्स सम स्पर्म्स अंटिल दे आर इजैकुलेटेड, और इसके अंदर स्पर्म्स होंगे तो ज़ाहिर स्पर्म्स जो हैं दे कम आउट, और इसके साथ ऑब्वियसली there are secretions of these different glands, and they constitute then a semi-solid, that is a gelatinous, so semi-solid liquid which we call the semen. That is distal to the ampulla, the ductus deferens becomes the ejaculatory duct, और ये ejaculatory duct बन जाता है. The urethra is the final section of the reproductive duct system. और इट इज़ क्योंकि यूरेथ्रा जो है इट इज़ अ कॉमन पैसेज वे फॉर द रिमूवल ऑफ यूरिन एज वेल एज फॉर द रिमूवल ऑफ रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, और ये रिप्रोडक्टिव फ्लूइड आल्सो कॉल्ड एज सीमन. एंड देन व्हेन इट कम्स इन द पीनस, so it is then ready to introduce into the female. So this is all about, this is a transportation right from the part from the where the sperms are produced, and it gathers different types of collections of the
द ग्लैंडुलर कनेक्शन, जिसमें जिसमें मुख्तलिफ ग्लैंड्स की सीक्रेशंस हैं। काउपर्स ग्लैंड्स है जिसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर एम्पुलरी ग्लैंड एम्पुला है। तो वहाँ से होता हुआ ये फिर ये द फ्लूइड है विच कम्स आउट द बॉडी। So this is all about the transport of the sperms in a human or man. So this is all about.